हेलो व्यूअर्स, अनअकैडमी आईएएस मंजिल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, द हिंदू न्यूज़पेपर में 15th अगस्त ऑन द ईव ऑफ इंडियाज 80th इंडिपेंडेंस डे, a very strange news came which really made me unhappy about this Independence Day. Because Independence Day is not only a matter to feel proud about the country. It is not only a matter to be emotional about the struggle which our freedom fighters have made for this country, but it's also a day where we have to introspect. Where are we heading towards? Have we really achieved Swaraj in its true sense or not? Or just the elites have changed before 1947 and after that? So it becomes a very important day to think, to feel, to analyze, and then come to a solution which could make India a better country, which could help us in realizing Swaraj in its entirety. So, in that context, this news becomes very important. So, this news is basically related to a recent report released by World Bank Economic Review. And the title of this report is Business Groups Concentration and Market Power in India. And in this particular study, a very shocking, unexpected data they have published is that in India, 60% of the total income which the corporate sector earns, which means out of all the companies in India, the 60% income earned by the corporate sector is going only to 5 big family businesses. 60%, which means if India may 100 rupees is the total combined income earned by all the companies. If you add the income of all the companies who are there active in India, out of that 100 rupees, 60 rupees is only going to India's top 5 big family businesses. Now, this is a data when you are reading on 15th August, then yes, we need to introspect. We need to think about whether everything good has happened in this country or not, or still we should be, very much sensitive that India has grown. India is the world's fastest growing economy, but the same India is witnessing a very extreme form of inequality, market dominance, which can be detrimental in the future if the course correction is not made in the right way, at the right time, in the right place. So, ये जो statement आया है that top 5 big family businesses hold over 60% of the income. Let me first tell you that ये basically income के context में बात किया गया है that all the total income earned by the corporate sector combined, इसका 60% is going to just 5 major businesses family. और ये 5 major businesses families, they don't control 60% of Indian companies, right? If they would have been controlling these 60% of Indian companies, and then they would have earned 60% of the total corporate income, then that would have been fine. So, just being 5 major businesses family, they are making 60% of the corporate sector income. That is something very, very shocking. Now, who are those 5 companies? Reliance, Adani, Birla, Jindal, and Tata Groups. So between 2001 to 2020, the total business revenue earned by all the companies combined in this 20-year time period, 60% of that business revenue has gone only to these 5 companies. इसमें जो दो सबसे बड़े कंपनीज हैं वो है आपके रिलायंस और अदानी ग्रुप्स. They have consistently constituted at least 20% share in the total income. मतलब 20% Reliance, 20% Adani, 40% तो इन्हीं का हो गया. And then
there's only one company जिनकी business revenue is 20 साल में they have steadily declined. It is Birla Group. बाकी जितने भी companies हैं उनकी businesses revenue have in fact increased. The only exception is Birla Group. Now इस रिपोर्ट पे ये बताया गया कि 1991 के बाद there has been a very good thing because 1991, you know, the year of LPG reform, the concentration in market has reduced. मतलब monopoly जो है वो reduce हुआ है, and that is why you are witnessing more and more competition, right? So that's a good thing. That 1991 के पहले, you know, protectionist era था. Socialist India के अंदर we were trying to protect few companies. We were giving them all sorts of protection. Foreign companies were not allowed. So it was like a baby who was never allowed to go out of the home. The baby was protected under the steel frame of India. That level of protection was given, and that's why India was not able to grow, because excessive amount of protection kills innovation, kills efficiency, and that's what happened before 1991. But after 1991, you know, FDI was allowed, foreign companies could come in, private sector mein new players can enter, startups can come, right? So yes, competition has increased, concentration, monopolization of Indian market has decreased, but that does not mean everything has been good, because during the same period after 1991, there has been some large family businesses groups who have been dominating the market. The top 25 family business groups constitutes over 50% of the GDP in 2020. So out of the total value of all the goods and services produced, only 25 family businesses groups were producing around 15% of that, right? So that is why the report says that after 1991, monopoly has came down, concentration in the market has came down, competition has increased, but despite that, the dominance of few large family businesses group has still been very, very much intact. So at present, the problem is not monopoly. आज मोनोपोली जैसी प्रॉब्लम नहीं है जो 1991 के पहले हुआ करती थी. आज प्रॉब्लम ये है कि कुछ लार्ज फैमिली बिजनेसेस ग्रुप्स वो एक सेक्टर में तो डोमिनेंट हैं ही, लेकिन वो बाकी सेक्टर्स में भी एक बहुत बड़े डोमिनेंट पोजीशन को होल्ड करते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल, लेट्स टॉक अबाउट रिलायंस, जियो, एनर्जी में रिफाइनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलायंस कैपिटल, रिटेल में यू नो रिलायंस स्टोर, रिलायंस डिजिटल, Reliance Fresh, right? Media में news channels. So this is what the report is saying, that yes, आज let's say retail में Reliance की monopoly नहीं है, मीडिया में रिलायंस की मोनोपोली नहीं है. जो 1991 के पहले मोनोपोली की प्रॉब्लम थी वो आज नहीं है. बट द प्रॉब्लम इज दैट all the individual market is by and large competitive. हर एक सेक्टर जो है वो competitive है. But in all those competition, there's one company who has a very important share in all the sectors. So this is what they have said. So even if in each individual market remains competitive, the same business group can accumulate enormous economic power across many markets. और ये होता है ना कि जैसे लेट्स गेट विद easy example, you become an IAS officer, right? So now already you have become an IAS officer, then you are going to give child a better education, child may start a business afterwards, और उस business में भी आपके network से उसको फायदा मिलेगा, right? So this is how once a family grows, then eventually वो family और grow करता है बाकी sector में. So bureaucracy वहां आएगा, business वहां आएगा, politicians भी उसी घर के होंगे. So this is what happens, right? So for example, Reliance had huge amount of money because of this energy sector, and then it took that extra money to invest in the telecom sector. And now Jio is one of the largest player in the telecom sector. So this is how the same business group is playing a very dominant role in all the sectors. So although yes, monopoly जैसी problem 1991 के पहले जो थी वो आज नहीं है, but the dominance of few large family business groups is there, and that is why it becomes difficult for the small businesses, for the startups, for them to come and play a very big role.
So that is why this is very surprising after liberalization, because liberalization के बाद सबको यही लगा था कि monopoly is going to come down, concentration is going to come down, dominance of few large companies would come down, there will be open market, there will be free market, churning is going to happen. Churning means old companies are going to go, new companies are going to come. But अगर आप देखोगे पिछले 20 साल में जो कंपनी बड़े थे वो आज भी बड़े हैं, या इनफैक्ट उससे और बड़े हो गए हैं. आप देखो आईटी कंपनी में वही टीसीएस है, वही कॉग्निजेंट है, वही विप्रो है, वही इन्फोसिस है. बट आप अमेरिका में देख लो, क्या कोई कुछ साल पहले तक एंथ्रोपिक को जानता था? टेस्ला इज ऑल्सो रिलेटिवली अ न्यू कंपनी इन दैट सेंस, जो आज एआई में कुछ कर रही है. ओपन एआई. तो ये कंपनीज पहले नहीं थे, बट इंडिया में जो 30 साल पहले से टीसीएस या जो भी कंपनीज हैं, दे आर देयर. Tell me, who is that new startup IT company who has been able to challenge the dominant position of TCS? No. So this is what churning is not happening. Because, innovation or anything comes from not old company, it comes from new companies. Because they have new ideas, they have new energy. Once a company becomes too big, it becomes lethargy. There is a huge amount of delay with respect to decision making. So that is why after liberalization, what we expected that the churning is going to happen in a very aggressive manner, that has not happened. और ये रिपोर्ट जो है वो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये बताता है कि कैसे अभी भी कुछ फैमिली बिजनेसेस की डोमिनेंट पोजीशन बहुत इंटैक्ट है. आगे बढ़ने के पहले विल डिस्कस वेदर इनइक्वालिटी इज गुड और बैड, और शुड वी बी वरीड रियली अबाउट दिस रिपोर्ट, और देयर इज सम गुड थिंग ऑल्सो. We'll discuss all of that, but before that, you can join me on my Telegram channel where you will be getting regular updates about economy as well as various other job opportunities and internship opportunity. You can also get guidance from me. You can directly connect with me, and I can give you advice related to your study about your graduation, post graduation, or any other scholarship if you're interested in. Okay. Now, what could be the reason? Reason ये है, इस रिपोर्ट में बताया गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज given preference for some businesses because they wanted to create some businesses as the national champions. नेशनल चैंपियंस मतलब कुछ बिजनेसेस को बहुत फोकस किया गवर्नमेंट ने, सो दैट वो कंपनीज बहुत बड़े कंपनीज बने, द नेशनल चैंपियंस. क्यों? बिकॉज अगर कोई कंपनी बड़ा कंपनी बनता है तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा उठाता है, बेटर क्वालिटी इंश्योर कर पाता है, कॉस्ट कट कर पाता है सिग्निफिकेंटली, इनोवेशन हो पाता है, और ये सब चीज से एक्सपोर्ट मार्केट में भी हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले होगा. So that's why they wanted, the government of India intentionally gave that preference to some businesses to become national champion इस पूरे 2000 से 2013 के बीच में, और जिसकी वजह से few companies have got such a big dominant position. ये सेम चीज साउथ कोरिया ने भी किया, जहां पे इस पूरे सिस्टम को, जहां पे दे प्रमोट सर्टेन कंपनीज एज द बिग नेशनल चैंपियन कंपनी, इस सिस्टम को चैबॉल्स कहते हैं. और इसी के अंदर मेजर प्लेयर्स लाइक सैमसंग, एसके ग्रुप, हुंडई, एलजी ग्रुप, ये कुछ चार वो नेशनल चैंपियंस हैं, टाइटन्स हैं, जिसको साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने बहुत हद तक प्रमोट किया था. एंड यू आर सीइंग द रिजल्ट. सैमसंग आज देखो 20% ऑफ साउथ कोरिया की जीडीपी रखती है. इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्मार्टफोन ब्रांड, और अब एआई में कितने एग्रेसिवली वो काम कर रही है. सिमिलरली एसके ग्रुप, हुंडई, एलजी ग्रुप. यही सेम चीज जापान में भी फॉलो किया, जहां पे इस सिस्टम को ज़ाइबात्सु कहते हैं, जिसके अंदर कुछ पावरफुल फैमिली कंट्रोल जापानीज बिजनेसेस को काफी प्रमोट किया गया. सुमितोमो, मित्सुई, मित्सुबिशी, यासुदा, ये बिग 4 जापानीज कंपनी है. सो देयर इज नथिंग रॉन्ग ओवर देयर. सी व्हाट इंडिया हैज डन, इट्स नथिंग रॉन्ग ओवर देयर. सो वो साउथ कोरिया ने किया, जापान ने किया, और कोई भी कंट्री जो डेवलपिंग है और डेवलप्ड के रास्ते पे गई है, सो दे हैव टू प्रमोट दीज नेशनल चैंपियंस. बट after a certain time, you require churning to happen. That's what this report is cautioning about, which will come back to it. So now the question is whether inequality is always bad. ये जो डेटा आया है 60% of national income, 60% of corporate income is going to top few big businesses company. Is this always bad? Is inequality always bad? Now here are my 5 takes. Yes, this particular data is very shocking. This particular data needs to be introspected, but ऐसा नहीं कि इस डेटा की आने की वजह से कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम दिखने को मिल रहा है and now nothing can be done. See, रॉल्स ने यही चीज कहा था. जॉन रॉल्स, a very important political philosopher,
economist who gave his book, who published his book in 1979, A Theory of Justice. And here he said that inequality is not always bad. Inequality is not always bad as long as inequality is leading to upliftment of the poor people. कि अगर अमीर अमीर हो रहा है, अगर अंबानी और ज्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं, अदानी और ज्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं, दैट इज नॉट माई कंसर्न. दे विल डू दैट. But if Adani is growing and the poor people who was living on slum, they are not getting their pakka makan, that is where the problem is. Because absolute equality is not good, right? Inequality to rahega hi rahega society mein. Inequality is not something which is very, very bad. So that's why John Rawls has agreed that we should not be very much critique of inequality. Inequality has to be used in the right manner. राइट, बिकॉज अगर अंबानी और बड़े नहीं बने, अगर अदानी की कंपनी और बड़ी नहीं बनी, तो गवर्नमेंट को टैक्स कहां से आएगा? दिस इज व्हाट हैपेंड बिफोर 1991. बिफोर 1991 के पहले वी वांटेड टू हैव अ सोशलिस्ट कंट्री, और सोशलिज्म के अंदर वी नेवर वांटेड रिच पीपल टू बिकम रिच, और वी डिड नॉट वांटेड पीपल टू बिकम रिच, because if people will become rich, then there will be inequality, there will be concentration of wealth, and in doing that we ensure that everyone remain poor. सो यस, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ये 60% जो इनकम जा रहा है इन 5 बड़े कंपनीज को, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं. प्रॉब्लम ये है कि क्या इनके आगे बढ़ने से हेल्थ ऑफ द पुअर पीपल इज गेटिंग बेटर, एजुकेशन फॉर द पुअर पीपल इज गेटिंग बेटर और नॉट. इसी को रॉल्स ने डिफरेंस प्रिंसिपल कहा था, दैट इफ यू आर हैविंग अ हाई इनइक्वालिटी, if companies are becoming much more richer, but if that is not able to bring difference at the level of the poor people, then that inequality is unjustifiable. Second, my takeaway is that ठीक है, ये 60% कॉर्पोरेट इनकम 5 बड़े कंपनीज को जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम तब बन जाती है जब कंपनी आगे बढ़ती है, लेकिन उस एक्स्ट्रा पैसा जो कंपनी अर्न करती है वो केवल कंपनी के सीईओ या टॉप लेवल के पोजीशन पे जाते हैं. आज भी आप देखो L&T, इन्फोसिस जैसी कंपनी, उनका क्वार्टरली रिजल्ट देखो, ह्यूज क्वार्टरली रिजल्ट. बट एक छोटे से एम्प्लॉय से जाके बात करो इन बड़े बड़े कंपनीज में, तो वो बोलते हैं कि मेरा सैलरी लगभग ना के बराबर है और जो ग्रोथ है वो बहुत कम है. So if company is growing, then the company stakeholders, be it a small employee or be it the board of director members, everyone should have a subsequent increase. और यही चीज इस साल इकोनॉमिक सर्वे में भी कहा गया है कि इंडिया के टॉप 500 कंपनीज की कॉर्पोरेट इनकम काफी बड़ी है, बट दैट इज नॉट परकोलेटिंग एट द बॉटम ऑफ द कंपनी. इट इज बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड एट द टॉप, जिसकी वजह से कंजम्पशन पे इफेक्ट आ रहा है, बिकॉज उस कंपनी के मैक्सिमम एम्प्लॉयज का इनकम उस लेवल से नहीं बढ़ रहा है. थर्ड, if a country is having this kind of situation जहां पे इतनी बड़ी इनकम 5 कंपनीज को जा रही है, वो अगेन तभी जस्टिफाइड है कि वो नेशनल बिल्डिंग के लिए काम करे. क्यों ये लोग कंपनी एआई में कुछ नहीं कर रहे हैं? ये वही कर रहे हैं, एयरपोर्ट चलाओ, दुकान खोल लो, राइट, असेंबल करो. व्हाट इज स्टॉपिंग देम फॉर इन्वेस्टिंग इन R&D? जापान, साउथ कोरिया, जो मैंने एग्जांपल लिया, जाइबात्सु और चैबॉल्स, ये सिस्टम में अगेन यही मॉडल फॉलो किया गया था कि कुछ कंपनीज को नेशनल चैंपियंस बनाएंगे, बट दैट वाज बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट these companies have to deliver something very great for the country. Otherwise, government will stop protecting them. Otherwise, government will stop giving any kind of SOPs to them. Right? So why not Adani Group, let's say, one of the big companies in India, सुनने में आ रहा है कि Adani is going to run their own airlines. Now, should we expect this kind of innovation coming from such a big company like Adani? Should they not do something related to artificial intelligence? Should they not do a tie-up with TCS and collectively come together to make our own large language model? So, ये companies जो हैं, ये national champions हैं, रहने दो. But government should make it very clear that, see, if you're not doing something in form of R&D, innovation, next generation technology, then we are not going to give you same level of protection. Fourth, open competition होना चाहिए. ये गवर्नमेंट का जिम्मा है. जो बड़े कंपनी हैं वो अपने पावर को दूसरे सेक्टर में इंफ्लुएंस ना करे. चर्निंग हैज टू हैपन. आईटी सेक्टर में जैसे अब ये बड़े कंपनीज हैं, इनसे रिफॉर्म एक्सपेक्ट नहीं करो. आप सोचो कि यूएस में जो आईटी कंपनीज हैं, वो आईटी कंपनीज आज क्या एआई में वो कर पा रहे हैं जो नए कंपनीज यूएस में कर पाए हैं? ओपन एआई कर पाया, एंथ्रोपिक कर पाया, क्या ये कर पाए जो एग्जिस्टिंग आईटी कंपनीज है? नो, चर्निंग हैज टू बी देयर. इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनी
यूएस में टेस्ला के पहले कौन थी, अब कौन है, गाड़ी बनाने की कंपनी, स्पेस सेक्टर की कंपनी, right? So we need to allow that churning to happen. That's where innovation and other things come. Regulation tightening गवर्नमेंट का काम है। बड़े कंपनीज हैं, लेकिन बड़े कंपनीज अपने पैसे को गलत तरीके से यूज करके अपने डोमिनेंट पोजीशन का फायदा ना उठा सके। So yes, if they're working hard, they're doing innovation, and that's why they're getting a huge amount of income, it's fine. But it should not be just because government उनको लाडले बच्चे की तरह पाल रही है. That should not be there. So yes, inequality जो ये report आया है, it's a matter of concern, but that does not mean everything is bad. If we are able to fulfill these 5 pillars, then this inequality can be utilized in order for us to become a country heading towards Viksit Bharat. इस रिसर्च पेपर में यह कहा गया है कि टैक्सेशन से कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है अगर आप इसको कम करना चाहते हैं। सिमिलरली आप किसी कंपनी को रोक नहीं सकते हैं कि अगर आप एक सेक्टर में तो आप दूसरे सेक्टर में जा नहीं सकते। इस रिपोर्ट में एक सॉल्यूशन बताया गया है कि कोई भी कंपनी इंडिया में किसी भी सेक्टर में काम कर सकती है, राइट? वो रिटेल में काम कर सकती है, वो एयरलाइन चला सकती है, वो एयरपोर्ट चला सकती है, वो रिफाइनरी चला सकती है, कुछ भी कर सकती है। बट देयर शुड बी अ कैप that once you reach X% of specified market, you have to get out of the picture. राइट? कि मान लो एक कंपनी ए है जो एक सेक्टर एक्स में काम कर रही है, फिर वो वाई सेक्टर में एंटर की, फिर वो जी सेक्टर जेड सेक्टर एंटर की, लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपैंड कर रहे हो और एंटरिंग डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर, बट उस सेक्टर में आपको नहीं रोका जा सकता। आपको जिस सेक्टर में एंटर करना है करो। द ओनली मोमेंट व्हेन यू गोइंग टू स्टॉप इज वंस यू अचीव X%, मतलब अ सर्टेन शेयर इन द वाई सेक्टर, अ सर्टेन शेयर इन द जेड सेक्टर, सो दैट ये डोमिनेंट पोजिशन एक ही कंपनी का हर एक सेक्टर में ना बने, विच इज बीइंग वेरी वेरी डेट्रीमेंटल एट प्रेजेंट, राइट? सो ये कुछ सॉल्यूशंस है आपके हिसाब से फ्रेंड्स। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, तो मैं आपके व्यू पॉइंट जानना चाहता हूं, आप अगर पॉलिसी मेकर रहते तो क्या सॉल्यूशन आप रिकमेंड कर सकते हो इस इनइक्वालिटी को कम करने के लिए, और कैसे इसको यूज किया जा सकता है और देश के बेहतरी के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स। सी यू अगेन सम ऑफ द वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।